Hello friends, welcome to HP Diamond Academy. In the last lecture we have started the discussion on the classical mechanics. So in this particular lecture we will discuss about the generalized coordinates and degree of freedom. So let's start our discussion. So the generalized coordinates are the independent coordinates that are sufficient to determine the position of particle. So generalized coordinate वैसे coordinates हैं जो कि particle की position को determine करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, generalized coordinates. So let us discuss this with an example. So let us take an 2D plane, okay, and we have a curve like this. Okay, so we have a curve like this. So let us consider the position of a particle here, okay, and here. So we have the position of particle at time t is equal to, let us go back to the definition first. So we have the independent coordinates that are sufficient to determine the position of particle at any time t. Let us have a look on this any time t. Okay, so let us consider the position. P is the position of the particle at time t is equal to t1, and q is the position of particle at time t is equal to t2. Okay, so let us consider the position of particle at time t is equal to t1 as x1 and y1, and the position of particle at t is equal to t2 is x2 and y2. Okay, so let us, so what are our requirement to determine the position of particle at point P? Okay, so for determining the position of particle at point P, that is at time t is equal to t1, we need x1 and y1. Okay, similarly, for determining the position of particle at time t is equal to t2, that is at q, at point q, we need x2 and y2. Okay, so at point P, अगर मेरे पास x1 and y1 है, ठीक है, so we can determine the position of particle at point P. अगर मेरे पास x2 and y2 है, okay, so we can determine the position of particle at point Q. Okay, so at random point Q, sorry, at random point R, that is at point time t is equal to t, what we need? We need the x distance x from y axis, and we need distance y from x axis. So we can clearly write x and y. So x and y are required to determine the position of particle at point R. So the generalized coordinates are x and y, because for determining the position of a particle at any time t, we need x and y. So these coordinates are the generalized coordinate. समझ में आ रहा है? तो पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट. ओके, सो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट वैसे कोऑर्डिनेट्स है जो कि पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, और जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स तो हमने समझ लिया. अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम, लेट अस गो टू द लिटरल मीनिंग. पार्टिकल को फ्रीडम है, तो कितने तरीके का फ्रीडम है पार्टिकल को मूव करने का, उसको हम क्या कहते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम. और let us go back to the definition. So degree of freedom, the number of independent ways in which particle can change its position. So particle की जो position कितने तरीके से change हो रहा है. Suppose the particle is moving from P to Q. तो particle की position कितने तरीके से change हो रहा है. So let us have a look. So x1 y1 से coordinate gets changed to x2 y2. Okay, so when the position is getting changed from P to Q, कोऑर्डिनेट इज गेटिंग चेंज फ्रॉम x1 y1 टू x2 y2. सो x1 में चेंज हो रहा है, x में क्या चेंज हुआ, x1 टू x2, और y में क्या चेंज होगा, y1 टू y2. कितने तरीके से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, दो तरीके से, x में चेंज हो रहा है और y में चेंज हो रहा है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, दो हो गया. और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, नंबर ऑफ जनरलाइज. डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट. तो नंबर ऑफ जनरलाइज कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे, x और y मतलब दो है, तो दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ generalized coordinate. ओके, सो द जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स वैसे कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि पार्टिकल की पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं. तो एट पॉइंट पी हमें क्या चाहिए, एक्स और वाई चाहिए फॉर डिटरमाइनिंग द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट पी, और क्यू पे क्या चाहिए, x2 y2 चाहिए. अगर x2 y2 हमें मिल गया तो हम पार्टिकल को पोजीशन को डिटरमाइन कर सकते हैं. समझ में आ रहा है? और दिस इज एट एनी टाइम t. So at time t1 the particle was at point P. So x1 and y1 are required to determine the position of particle. So x1 से क्या हो जाएगा, at by x1 we get the
distance from y axis, and y1 we get the distance from x axis. Okay, so we can determine the position of particle at point P, similarly at Q2. ओके और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, कितने तरीके से पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, उसको हम कह देंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम. समझ में आ रहा है? सो लेट अस मूव फर्दर. So this we can determine with polar coordinates also. So it is advisable that if we are dealing with any curve, so let us go with the polar coordinates. Okay, so this we can determine with the polar coordinates also. Let us draw the 2D plane. So we have the 2D plane like this, and we have a curve like this. Okay. Okay. So we have the coordinate in polar coordinate as r and theta. Okay, so let us consider point P and point Q. Okay, so let us take this is our pole. Okay, so the distance of this point from pole is, let us take this as r1. This is r1 and angle of inclination as theta1. So this is r1 and theta1. Similarly this one, let us take the distance from our pole is r2 and angle of inclination from initial line as theta2. The coordinates are r2 and theta2. Okay, so for determining the position of particle at point P, we need r and theta. So r and theta are the generalized coordinates. So particle की position को determine कौन कर रहा है, r और theta कर रहा है. तो क्या हो गया, generalized coordinate r और theta हो गया. Similarly point Q पे particle की position को determine कौन कर रहा है, r और theta कर रहा है. तो r and theta are the generalized coordinates. Okay, these are the generalized coordinate. A number of generalized coordinate इज इक्वल टू 2, आर और थीटा मतलब 2 हो गया. और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, तो पार्टिकल की पोजीशन जब चेंज हो रही है P टू Q, तो R1 थीटा 1 से क्या चेंज हो रहा है, R2 थीटा 2. तो कितने तरीके से पार्टिकल की पोजीशन चेंज हो रही है, तो R1 में चेंज होने से हो रही है और थीटा 1 में चेंज होने से हो रही है. तो थीटा 1 चेंज टू थीटा 2 और R1 से R2 में चेंज हो जा रहा है. तो दो तरीके से चेंज हो जा रहा है. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो गया, 2 हो गया. एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू नंबर ऑफ जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, एज सिंपल एज दैट. Let us go back to this point. The presence of constraint reduces the generalized coordinates. Okay, so constraint की वजह से generalized coordinate में change होता है. Let us go to this concept. Let us take an arc of a circle. Okay, so we have a 2D plane like this. Let us take an arc of a circle. Okay, so the radius of circle is, radius of this arc is, radius is equal to r. So let us consider through points here. Okay, so we have, let us take point P and point Q. Let us take the coordinate of point P as x1 comma y1 and coordinate of point Q as x2 comma y2. Okay, let us take a random point r. The coordinate is x comma y. Okay, since the radius of this arc is r, we have the relation as x square plus y square is equal to r square. So from here we have y is equal to r square minus x square under root. So the coordinate, the random point, the coordinate of the random point r will be, we can replace y with r square minus x square. Okay, so once we get the value of x, we can determine the position of particle. So for determining the position of particle, the only requirement is x here. So the generalized coordinate is x in this particular case. Okay, so the generalized coordinate is x here. Okay, and number of generalized coordinate is equal to 1. Okay, so in the earlier case, when it was a random curve, we have the generalized coordinate as x and y, because there was no restriction here. K is equal to 0 here because there is no constraint, and k is equal to 1 here because we have the constraint in case of arc of a circle as x square plus y square is equal to r square. So due to presence of this constraint, the number of generalized coordinate got reduced from here. The generalized coordinate, number of generalized coordinate was 2. So due to presence of this constraint,
that is x square plus y square is equal to r square, the number of generalized coordinate got reduced from 2 to 1. Okay, so we will discuss about the generalized coordinates of various cases in next particular lecture. Thank you.